Hello friends, in this video I will tell you what is IDE. IDE stands for Integrated Development Environments. It is a type of software that is used to create our source code into many functionalities, and we can also customize our source code. It is a type of your GUI software. You know very well about GUI. GUI stands for Graphical User Interface that helps programmer develop code efficiently. Different types of IDE of Python, that is Visual Studio, Jupyter, PyCharm, IDL, Vim, Atom, Sublime, Zoom. We can customize our many things with the help of this IDE. We have many features about your IDE. First, editing source code. Second, highlight syntax, autocomplete, executable. Fifth, debugging, manual testing. Now I will show you how these features work. This is my simple program in Visual Studio. This is a Visual Studio editor. You can install your Visual Studio. ये देखिए, ये आपका प्रिंट हेलो वर्ड है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की कलर, ये येलो कलर में है तो आपका ये ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। तो डेट इज योर एडिटिंग सोर्स कोड, और इसमें हाईलाइट भी हुआ है, जो हमने अंदर मैसेज दिया डबल इनवर्टेड कॉमा में हेलो वर्ड, वो आपका शो भी हो रहा है। ऑटो कंप्लीट का सिंपल मीनिंग है, सपोज इफ आई राइट पी हियर, तो डेट मीन्स आपको नीचे देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट शो कर रहा है, डेट मीन्स एंटर करिए तो आप प्रिंट डायरेक्ट देख सकते हैं। बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मीन्स ये हमें सीक्वेंस बताएगा कि कहाँ पे हमें लाइन बाय लाइन और कहाँ पे हमें सेमी कॉलन कम है। ये हमें एक पैटर्न बताएगा कि हमें अपना सोर्स कोड कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है। हमें नीड नहीं है कि हमें अपनी साइड से कुछ करना है, ये हमें खुद ही ऑटोमेटिकली शो करेगा। और डिबगिंग मीन्स हमें एरर शो कर देगा, लाइक this. Thank you.